हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 8, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट्स में ये कैसे होता है, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, उससे रिलेटेड टर्म्स और जानेंगे बहुत कुछ इस चैप्टर, इस वीडियो के अंदर। सो इट्स एंटायर चैप्टर कवर्ड इन दिस वीडियो। सो आप नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आराम से कंप्लीट वीडियो बिना स्किप किए देखिए, ताकि उनके सारे कंसेप्ट आपको समझ आ सके, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस में रोज़ अपने इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर हमें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो अपडेट। और आप सभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचाना हमारा मिशन है। तो इसके लिए भी हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस मोटिव को सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके पास भी कुछ नया सीखने को मिले। और अगर ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा आज क्या क्या हम कवर करेंगे। व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर टुडे। फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, देन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, क्या क्या मोड होते हैं, the ways of reproduction. Then we will learn two types, asexual and sexual reproduction. Then the mode of asexual reproduction, कैसे होता है वो चीज़, the way it is, and the part of flower के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे pollination, the process, and the fertilization, seed formation and dispersal. ये सारी चीज़ें बात करेंगे और बात करेंगे जर्मिनेशन की। ये पूरी साइकिल हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट द प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज रिप्रोडक्शन। आखिरकार रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं? प्रोसेस को। किस प्रोसेस को? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स। कैसा प्रोसेस है? नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने का। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने का जो प्रोसेस है, उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस। और क्या है? दोनों एक स्पेसीज है। इट्स नॉट लाइक कि पोटैटो से ओनियन आएगा, नहीं, ओनियन से ही ओनियन आएगा, बट पोटैटो से पोटैटो, बट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना फ्रॉम द सेम स्पेसीज इज द रिप्रोडक्शन। क्लियर? क्यों जरूरी है? First, the process of reproduction is one of the important life process and is essential for continuity of the species. Species की continuity के लिए ये process होना जरूरी है। Necessary for the perpetuation and preservation of the species. ये किसके लिए necessary है? Species के बचाव के लिए, उनकी preservance के लिए, ताकि वो ऐसी species आगे भी हमें मिलती रहे। Then अब हम बात करते हैं मोड्स की। कितने मोड्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं, 2 मोड्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या होता है? द प्रोसेस इन विच वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड। ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जिसके थ्रू एक ही पेरेंट इंडिविजुअल से वी कैन ग्रो द न्यू काइंड ऑफ इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म। हमें दो की जरूरत नहीं होती। In this, it occurs through the following method: vegetative propagation, budding, fragmentation, and spore formation. These are the 4 known ways of asexual reproduction, जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन होता है सिंगल पेरेंट का। सिंगल पेरेंट्स के थ्रू we just get the new organism, that is asexual reproduction. Clear? अभी बात करते हैं इन चारों प्रोसेस की आगे डिटेल में, बट पहले उसके जान लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या। हमने एसेक्सुअल पढ़ा, सेक्सुअल क्या हो गया? द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेयर न्यू ऑफस्प्रिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स या पॉलन ग्रेन्स। मतलब उसको हम सीड्स के थ्रू हमें मिलते हैं। न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो
we get the new organism by the seeds, और इसमें two parents are involved, or either one parent could be, but two ways of it is involved. That is, we get wheat from the seeds, grams, peas, maize, so many things are there, flowers are there, who we get from the seeds. So that is why there is a sexual reproduction. Sexual reproduction is where we get the new organisms by the seeds. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करें तो दिस इज अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which plants are produced from stem, roots, leaves, etc. वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब ये क्या हुआ, ये एक asexual reproduction है जिसमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। उसमें क्या होता है, हम इधर उसके किसी पार्ट से, चाहे वो स्टेम है, रूट है, लीफ है, उन सब से वी गेट द न्यू वंस। बाय स्टेम is done in rose, money plant, sugar cane, etc. जिसमें हम स्टेम को just we propagate into a new plant. By roots, dahlia, sweet potato. By leaves, pyrophyllum. चलिए आगे बढ़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय कटिंग। तो कट किया यानी कि ए स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेम इज रिमूव। बाय स्टेम वाला है ये, बाय स्टेम इट इज रिमूव, वी make a break, we cut a part of stem and then वो स्टेम सूखा नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ बर्ड्स होने चाहिए, मतलब कुछ होप कि वहाँ से कुछ आ सकता है, विल ग्रो। सो ये देख सकते हो यहाँ पे फिगर में ये छोटी छोटी चीज़ें, दीज आर द बर्ड्स। इसको कट किया, एक न्यू जगह लगा दिया, तो क्या हुआ, we put it into a new moist soil, new pot, then just wait for the thing, the upper part पे यहाँ पे जैसे बड है तो वैसे ही ये धीरे धीरे ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज दिस विल डेवलप इट्स ओन रूट्स एंड दिस विल प्रेजेंट इनटू अ न्यू प्लांट। देन बाय ग्राफ्टिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। दिस इज अगेन इन द स्टेम्स वेयर प्लांट of desired quality is developed from two different plants. The part that has shoot part is called scion and the part having root is called stalk. Scion is attached to the stalk which provides support and basic requirement for the development of plant. For example, apple इस तरीके से grow किया जाता है, mango, rose, etc. Then by leaves. When the leaf of some plants are buried into the soil, the cut edges or the margins, here these are the margins. Margins develop new plants. See, छोटे छोटे यहाँ पे plant आने, छोटी छोटी leaf आ रही है. This is the big parent leaf. These are the new leaves, यानी new plant की growth. So this way we just produced a new green from the leaf. It is done in pyrophyllum. Okay. इसका एडवांटेज क्या है? The advantage is take less time to grow. It's just bear the fruit, flowers earlier than those which are produced from seeds. क्योंकि वो seed से पहले छोटे से then वो बड़े होंगे। इनको तो हमने already एक stem, एक root दे करके बड़ा किया है, तो फिर they are having much capacity to grow faster and better and bear flower and fruits earlier than those who are right from the seeds. Then these plants are also the exact copies of the plant, the parent plant, because इनका जो उसमें material है that is also same, the stem is same thing, so वो exact copy होते हैं अपने parent plant के। How the health was there वो भी वैसे ही हो सकती है। Now next process, that is budding. Budding where the child individual is informed by the small projection on the parent's body. बर्ड इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें क्या है कि पेरेंट की बॉडी पे छोटा सा न्यू फॉर्मेशन एंड दैट देन ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस वे द रिप्रोडक्शन हैपेंस. मोस्टली फाउंड इन फंगी लाइक yeast, that is they reproduce with budding. This is a yeast having the parent yeast cell. Then there is a formation of bud here. See on the body, this is small. It just grow and nucleus दो हो गए यहाँ पे. इनका जो center part था, it is divided into two.
जैसे जैसे वो डॉटर सेल ग्रो हो रही है और धीरे धीरे ग्रो होते होते देयर इज अ चेन ऑफ सेल एंड दीज ऑल आर द डॉटर यीस्ट फॉर्म बाय द पेरेंट यीस्ट। क्लियर है बडिंग कैसे हुआ। अब आगे बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन which happens in Spirogyra, an organism where the parent cell break into small pieces, fragments। क्यों फ्रैगमेंटेशन बोला, क्योंकि इसमें जो पेरेंट सेल है वो फ्रैगमेंट हो गई, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गई और ईच of that piece grow into a new plant, new individual. That is why this is the fragmentation process. Clear? It happens in algae. If water and nutrient are available, algae will go and multiply by the fragmentation process. Clear? अगला है स्पोर फॉर्मेशन। ये भी हमारा एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी we do not need seeds. Spores are special, small, spherical bodies having thick protective wall that protect the unfavorable conditions. Here in this, you can see this is the spores. This is a shield for the spores, and inside there are so many spores. When the favorable condition arrives, the spores burst and germinate to develop the new plant. जब जैसे कुछ फेवरेबल कंडीशन मतलब कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी हुई, हवा पानी, तो इस वजह से ये दिस सर्कल विल बर्स्ट अप एंड स्पोर्स विल रिलीज एंड दीज स्पोर्स कैन जर्मिनेट इनटू द सॉइल एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। क्लियर? हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर की। हमने आपने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा डिफरेंट पार्ट्स के, तो अभी उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं। तो ये हमारे फ्लावर है। वी नो दिस इज सेपल, दीज आर पेटल्स, दिस इज पिस्टल एंड दीज आर दी स्टेमन। स्टेमन में क्या क्या है? स्टेमन में देयर इज द टॉप पार्ट इज एंथर और जिस स्मॉल पाइप से वो जुड़ा है दैट इज फिलामेंट। एंड पिस्टल में दिस टॉप पार्ट इज स्टिग्मा, द सेंटर tube-like structure is style, and the last one is ovary. So, sexual reproduction involves these parts of flower. This happens in flower, and then that produces the seeds as the result. The sexual reproduction involves the fusion of sex cells called gametes. और ये gametes या sex cells plant में कहाँ पाए जाते हैं? In the flower. Here it is the pistil, the ovary, this is the female gamete, and these are the male gametes in the stamen, in the anther. Okay. So let us learn in detail about the pistil first. Pistil, it has style, stigma, style, ovary, and ovules, the four parts. The stigma, the top part of the pistil, where it receives pollen grains, the top part, the mouth of the pistil. This it is little sticky so that pollen grains stick to it and it just grab it. Then style, the tube-like structure that connects stigma to ovary. This is the style which connects stigma to ovary, a tube-like thing. Ovary, the swollen bottom part of the pistil, which contain ovules. Okay, this is the swollen, this is the थोड़ा बड़ा सा part. This is a swollen part of the pistil. It contains ovules, and in the ovule there are small female gametes or eggs that is inside the ovule. That are the ovules. That is okay. Clear? Now stamen की बात करते हैं। stamen के दो parts होते हैं, anther and filament. सबसे पहले anther, the top part, the top spore kind of pollen grains, where there are these pollen grains, they are this bigger size. They are the pollen grains, the male gamete of the plant present in the anther. Then filament, the stalk, the pipe thing, the stem kind of thing that supports anther is the filament. Okay, clear? तो फ्लावर का फंक्शन क्या है? फ्लावर में आपने जान लिया there are male gametes, there are female gametes, and when these both just
combine, they produce seeds as the result. So the function of flower is to make female gamete and male gamete, and also to ensure that fertilization would take place for the seed formation. During the reproduction, male and female gametes fuse into the form of zygote. क्या समझे हम यहाँ पे? वही चीज समझे कि फ्लावर में सबसे पहले तो मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों होते हैं, तो फंक्शन ये है, किसी में एक होता है किसी में दोनों होते हैं, तो फंक्शन ये है कि दे मेक बोथ देम कॉन्टैक्ट ईच अदर और फर्टिलाइजेशन उससे प्रोसेस हो ताकि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सीड, दैट इज द न्यू बीइंग, एंड देन ये जो प्रोसेस है इसके बिटवीन व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन दे प्रोड्यूस द zygote. The new being, the first stage is known as zygote. चलिए इसके बारे में और जानते हैं. तो ये प्रोसेस जो है कैसे होता है? It is help of pollination. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of pistil is the pollination. चाहे वो एक फ्लावर में हो, दो फ्लावर्स के बीच हो, जैसे भी हो, but the transfer of pollen grains from the anther of a stamen to the stigma of a pistil is the pollination. क्लियर? दिस वे दिस स्टार्ट. इसमें क्या है? सेल्फ भी होता है, क्रॉस भी होता है. सेल्फ कैसे? जिस प्लांट जिस फ्लावर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट हो, वो कई बार विंड के थ्रू कुछ भी दे जस्ट स्टिक टुगेदर, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन. व्हेन द एंथर reaches to the stigma of the same flower, when the pollen grain of the same flower reaches to the stigma of the same flower, this is the self-pollination. ये कब हो सकता है? ये जब एक ही प्लांट में दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हो एक ही फ्लावर में. और क्रॉस पॉलिनेशन, when the pollen grain of a flower just transfer to the stigma of the same plant but of the different flower. या तो वो प्रेजेंट हो उसी प्लांट के अंदर दूसरा फ्लावर में, या फिर उसके तरीके के दूसरे कहीं कोई प्लांट में वो चीज़ दूसरे फ्लावर में वो पॉलिनेट हो जाए. दैट प्रोसेस इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर? सेल्फ पॉलिनेशन तो कब हुआ? जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है. और क्रॉस पॉलिनेशन कैन हैपन इन एनी प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज. So this way, this just create what it is create. How cross pollination happens? यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएगा? With just wind, तो लेकिन wind भी एक factor है. Insects, wind, water, animal and bird help in the pollination. So these are the agents of pollination. जिसकी हमने बात की. What are the agents? Wind, water, insect, birds, animals. These all are the agents of pollination. These are the external factors that help in to creating the pollination process. So firstly, पहले इस पूरे प्रोसेस को जान लें. तो कि प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे किया हमने क्या जाना? पहले तो फ्लावर के पार्ट जाने थे. उसमें क्या होते हैं? मेल एंड फीमेल गैमेट्स. When the male gametes from the anther, the pollen grains produce and stick to the stigma of the female gamete. Then stigma just suck in the pollen grains, and those when react with the eggs present inside, this just produces the new organisms, that is the zygote is present. Then the zygote develops into the seed, and then that seed develops when germinate into the soil. When we put that seed into the soil and give water, they germinate into a new plant, a new seedling. That is, the whole process is done. एक प्लांट से तो दूसरी एक न्यू प्लांट की तरफ पहुंच गए. ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इज द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जो है उसमें यहाँ पे जब से उसको फर्टिलाइज करते हैं, pollen grains and when fertilized into the female gamete to form a new species, new zygote, then this is the fertilization process. Clear? When the pollen grains are deposited on the stigma of the pistil, यही बात की थी, pollen grains stigma पे आए and starts to just react with the egg, and after some times they just produces a new being in the ovule, that is the zygote. So this process is the fertilization of
these male gametes into the female gametes. Clear? This zygote then develops into the new being of the embryo, and then that produces, when germinated into the soil, they just produce the seedling, the new plant. The seed formation, the fruit formation. When the fertilization happens, that is the zygote is created, the ovary grows into the fruit. देख रहे हो ये प्लांट का ओवरी था, फ्लावर का. This generally start developing as the fruit. धीरे धीरे ये फ्रूट के रूप में डेवलप हुआ, and the ovules present here produces as the seeds. So the outer part of flower just become dry and fall off, and the ovule just develops itself into the particular fruit of the plant, and the ovules here inside the gametes they are produced as seeds. There is a seed. Okay, the zygote is here, it is forming the seed kind of thing. Then when we just fruit get ripened, तो हम इस तरीके से क्या कह सकते हैं, फ्रूट्स कैसे कहते हैं? फ्रूट्स आर द राइपेंड ओवरी ऑफ द फ्लावर. जो फ्लावर था उसकी राइपेंड ओवरी, उसकी पक गई जब ओवरी, दैट इज द फ्लावर, that is a fruit. Okay, with this fruit protect the seed present in them. They are juicy, they are fleshy. Example: mango, apple, orange. Some are hard like almond and walnuts. Some fruits are they are the seeds, like potato. Now the seed dispersal. Seed एक जगह से दूसरी जगह गई कैसे? So it is produced with the seed coat. The seed contain the embryo enclosed and protected in the seed coat. When these cells fall down, then they start growing. If a large number of seeds fall on the same place, they will not germinate, they will not grow enough, because there will be no enough space for this light and water to help and them develop into the healthy plant. So they are scattered in different places, and that is the seed dispersal. How it happens? It happens with wind, explosion, animals and water. Wind के through ऐसे, wind just blow it away. When the seeds are light or something like that, they just blow it away at some distance to distance, and that's how the seeds get dispersed. Like seeds of maple, drumsticks, they are light, they have wings. Or dandelion, they have wings on them, so they can just flow with the wind and go wherever, and just wherever they fall, they could be germinate into the soil. With the help of water, in the water, some plants have outer fibrous spongy covering that are dispersed into the water. They might just disperse the seeds into the water that will flow and go to some other part, some other ways far from each other, and they just start germinating there. Then animals and birds के थ्रू मतलब कैसे हुआ? They can just eat the fruit. Their beak will still having some seeds inside, and they might just eat those with the bird's feces, like the excreta. They just excrete the seeds, and wherever they do it, it might just start germinating inside, and they might just grow the plant new. Then by animals, again in the same way, they might just, when they eat the plants, they eat the fruits, they might just have some of them stick to their body or some of them in their mouth, and when they just move to distant place, the seed get dispersed. Clear? And last one is explosion. Explosion क्या? Some fruits are so mature and they are so strained, they are so like just ready to be burst out. They are so full of that, and as soon as they just break open, the explosion हुआ. तो उस explosion में the seed parts can just burst out. They can just get
burst and dispersed it to a faraway place from the parent plant. So due to that, they are thrown with a great force in all direction. Example, castor plant में ये होता है, milkweed plant में होता है. The seed gets dispersed through the explosion. इसका बेनिफिट क्या है? जब ऐसा कुछ होता है, सीड डिस्पर्सल से क्या है, दे अवॉइड द ओवरक्राउडिंग ऑफ अ प्लांट, यंग प्लांट अराउंड देयर पेरेंट. मतलब जिससे वो हुए उसी के आसपास उनके हो, ऐसा नहीं होता. वो सीड डिस्पर्सल से दे गेट जस्ट फार अवे, दे जस्ट गेट सेपरेटेड आउट. इट हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग कंपटीशन between the plants and its own seedlings for the sunlight, water and minerals. Also, one of the benefits is that it enables the plant to grow into new habits for wider distribution and provide them with a better chance of survival. मतलब उनको ज़्यादा दूर तक अलग अलग किया तो एक साथ होते तो there will be competition for the sunlight चाहिए, mineral चाहिए, एक ही soil से चाहिए. When they get dispersed, they are happy to be grown into a healthy habit. They will be healthy habitat, they will be healthy things and they will grow into a healthy plant. Now seed germination. There is a seed with the embryo in the resting state. When they germinate, when we put it into the soil and it starts watering it, providing them light and everything. So धीरे धीरे वो क्या, they grow into a, they just break out from the seed coat into a tiny roots, then the root develop and then there is the upgrowth of the stem parts, they starts, that is the seedling. So that is how the seedling grows. You can see in the image also, it starts from a seed, small root kind of thing just grow and develop and deeper into the soil, then the upper part of the plant starts developing. The seedling grow faster and ultimately form a new plant. Yes, the seedling then grows faster and matures into a new plant, and as it matures, again the process of flower having, then producing this fruit formation, then the pollination, fruit formation, then seed formation, everything just develops into that same process जो अभी हमने पढ़ा था. तो इसी के साथ ही आपको समझ आया होगा ये पूरा चैप्टर में सारा प्रोसेस, इसकी सारे कंसेप्ट, इसके सारे कीवर्ड्स एंड एवरीथिंग, क्यों होता है, कैसे होता है एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल फॉर द नेचर. और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई, अच्छी लगी, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and hit the subscribe button to never miss any video update.